Hello my dear students of class 10th. My dear students of class 10th, I am Rajendra Rai from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, presenting this video for your learning. My dear students, currently in this series of the videos, you are studying about the chapter 2, that is control and coordination, and the chapter has been completed in previous videos. And now let us start the question and answer session. And in this first video, you will learn about the multiple choice questions. Multiple choice question will help you to learn the left part of the chapter, and your knowledge will be improved by learning these questions. So let us start. Question number 1, that is choose the incorrect statement about the insulin. Insulin, that is a hormone which gets secreted from the pancreas, and this insulin is responsible for the regulation of body sugar level, blood sugar level. Insufficient secretion of insulin will cause the diabetes, and it is produced from pancreas. So these three statements are true and correct. But incorrect statement is that it regulates growth and development of the body. It does not regulate the growth and development of the body. Okay. So answer will be first B, this one. And dear student, come to the second question. And the second question is that upon receiving a signal, the dendrite tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that create an electrical impulse in the dendrite, create an electrical impulse in the next neuron, release some chemical in the cell body of the neuron, and create a stimulus. So the question number 2, the answer is create the electrical impulse in the dendrite. That creates the electrical impulse in the dendrite, and answer is A. Question number 3. The chemical that cross the synapse to start a similar electrical impulse in the next neuron are released from the cell body. That is the question number 3. Means cell body में ही chemical release होता है, और वो chemical जो है आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज सी, दिस वन. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. पार्ट ऑफ द न्यूरॉन थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज. तो कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करती है? तो सेल बॉडी जो है वो तो सिक्रीट करती है केमिकल, लेकिन वो भी किसके कारण सिक्रीट करती है? द रीजन ऑफ सिक्रीशन ऑफ दिस केमिकल इज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट गेट जनरेटेड एट द सिनेप्स ड्यू टू द केमिकल सिक्रीशन. सो केमिकल सिक्रीशन फॉर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर द केमिकल सिक्रीशन, बोथ आर कोरिलेटेड. सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द नर्व एंडिंग 4D. सो क्या मतलब हुआ? द पार्ट ऑफ नर्व एंडिंग इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन केमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स. ओके, 4D. आंसर इज 4D. मतलब कि नर्व एंडिंग के जरिए ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में आगे जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. Given below are the parts of the neuron and that their functions in 2 different columns. Match the part of its correct function.
तो देखो डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट दैट द impulse is converted into a chemical signal for onward transmission. तो जो केमिकल सिक्रीट होता है, the impulse that get converted into the dendrite, ठीक है, into a chemical signal for forward transmission. So let it confirm. This question is confirmed by the question number 5, and dendrite, the work of dendrite is the impulse is converted into a chemical signal for onward transmission, and axon that through which the information travel as an electrical impulse. Got it? And nerve ending where the information is acquired. So the answer is this, that first one, okay, second, third 3, and third 2. So this is the information that is given over here. C, and answer is 5. That is 5B. Answer is B. 5B. Okay. Now come to 6. Which is the correct sequence of the component of the reflex arc? Reflex arc में कौन सा component होता है sequence wise? रिसेप्टर होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स. So 6B and 7 given below are the part of the brain and one function associated with each part in 2 separate columns. Match the part. तो 4 ब्रेन का जो काम है, दैट इज हियरिंग एंड साइट, सुनाई देना और देखना. सेरिबेलम का काम है cerebellum, the work of cerebellum is that is walking in a straight line, okay, and the work of the medulla is blood pressure and vomiting. Medulla is blood pressure and vomiting. तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा A, 7A. And now come to the question number 8. The function of the 4 brain are sensation. 4 brain का function जो है वो, that is the sensation of feeling full, control of voluntary muscle, hearing and sight. So question number 8, that is the sensation of feeling full, control involuntary muscle, hearing and sight. Control of involuntary muscles. Okay, so answer is D, 8B. And the gibberellin promote क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन, स्टेम ऑफ द ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दीज. देखो आंसर इसमें सेल डिवीजन को छोड़ करके सारे आंसर हो सकते हैं. सेल इलॉन्गेशन भी हो सकता है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम भी हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ दीज नहीं होगा. सो यू कैन आंसर बी एंड सी. कंबाइनली यू कैन आंसर बी एंड सी, दिस वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज टर्म्ड एज द ग्रोथ इनहिबिटर? दैट इज द ABA. जिबरलिन नहीं होगा, ऑक्सिन नहीं होगा, इथाइलिन नहीं होगा, दैट इज ABA. सो 10 is C, that is ABA. 10 C. And now come to the 11. The directional movement or orientation of the part of the plant in response to light is termed as the phototropism. B. 11B. This one, 11B. And 12, that is
द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट आर शोन बाय विच प्लांट? तो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट नहीं होगा, कुकुम्बर प्लांट नहीं होगा, रोज प्लांट नहीं होगा। प्लांट कौन सा होगा? टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं। सिस्मोनास्टिक मतलब छूने से उसमें मूवमेंट आ जाता है। सो 12B एंड द salivation and vomiting are involuntary action controlled by the, that is controlled by the midbrain, because the at the midbrain there is a medulla। तो मेडुला जो है वो सेलिब्रेशन और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, जो कि इनवॉलंटरी एक्शन है। सो आंसर विल बी बी, दैट इज मिड ब्रेन, दिस वन। नाउ कम टू 14, the shape of guard cells changes due to the change in the, क्या होगा? प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल नहीं होगा। अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, यही करेक्ट होगा। तो आंसर विल बी सी, बाकी कुछ नहीं होगा। सो 14C, 14C। एंड नाउ द 15, the substance that triggers the fall of the mature leaves and fruits from plants is, that may be ABA. ABA is the growth inhibitor hormone. So 15C, 15C. My dear student, you can see this questionnaire that is the given on the board, that here what that has been taught in the online class. And come to the next question, that is 16. The dramatic change of the body features associated with the puberty are mainly because of the secretion of testosterone from testes and estrogen from ovary. So answer is C, 16C, 16C. And come to the 17. The dwarfism in human being is caused due to the deficiency of growth hormone 17 GH that gets secreted from the pituitary gland. So 17B, 17B, that is the answer, correct answer, GH, growth hormone. And 18, spinal cord originates from the medulla. जो मिड ब्रेन में मेडुला होती है, वहीं से स्पाइनल कार्ड की ओरिजिन होती है। एंड 22, that is I am coming on the question number 20. Let it see. The electrical impulse travel in a neuron from, अब देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कहां से ट्रेवल करती है, किस जगह से? तो आप ये जानते हैं कि डेंड्राइट में केमिकल मतलब सिक्रीट होकर के वेसाइकिल से वो रिलीज किया जाता है सिनेप्स पे, और सिनेप्स पे जैसे रिलीज किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वहीं से कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम द डेंड्राइट दैट इज रिसीविंग बाय द नर्व एंडिंग बाय द रिसेप्टर्स। तो ये कहां से शुरू होता है? द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट इज फ्रॉम द डेंड्राइट, that is from the cell body dendrite. Okay, that is from the axonal end, axon, cell body and dendrite. So question number 20, that is somehow this is confusing question, थोड़ा सा confusion है इसमें. So 20, that is from dendrite, cell body, the answer is D, that is the axonal gland, this one, axonal gland, axon, cell body and dendrite. Okay, so answer is D, answer will be the D, क्योंकि axonal end पे ही receive होता है electrical impulse that get generated by the dendrite.
ओके, सो ये सीक्वेंस जो है ये ठीक से, ये सीक्वेंस सही है डी। सो 20, क्वेश्चन नंबर 20 डी, आंसर इज डी। एंड 21, इन ए न्यूरॉन conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at in which place? 21, that is the conversion of electrical signal to a chemical signal occurs in the that will be either in the cell body or in dendritic end. So answer is C, 21, that is इसमें आंसर एक्सोनल एंड, बट that will be the dendritic end. डेंड्राइटिक एंड में ही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो वो जो है कन्वर्ट होती है केमिकल सिक्रीशन में, केमिकल सिग्नल में, डेंड्राइटिक एंड में। सो आंसर विल बी सी, 21 सी, 21 सी, 21 सी। ओके, एंड कम टू द 22, come to the question number 22, that which of the following statement are true? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? Sudden action in response to the something in the environment is called reflex action. Sensory neuron carry signal from the spinal cord to muscles. ये गलत है। Motor neuron carry signal from the receptor to the spinal cord, ये भी गलत है। The path through which signals are transmitted from a receptor to a muscle or gland is called reflex arc, ये सही है। एंड सडन एक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। सो फर्स्ट एंड फोर सी, दिस इज द करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट। ओके, सो 22 सी, 22 सी, फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज करेक्ट। एंड कम टू द 23, क्वेश्चन नंबर 23, that is which of the following statement is correct about the receptors? So gustatory receptor detect taste while olfactory receptor detect smell. तो यही आंसर सही है, 23A, 23A, this is the correct answer. And 24, this is the diagrammatic representation, so you have to see it. What is the correct direction of flow of electrical impulse? तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं बुक में, इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो जो एरो लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, सो दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ट्रेवलिंग फ्रॉम this. I think the answer will be A. Answer will be A, 24 C. The question number 24, the answer must be A. Answer must be this, not others. 24A. So 24, that is A. And 25, in a synapse, chemical signal is transmitted from the chemical signal that is transmitted from dendritic end of one neuron to axonal end of another neuron. So 25 and axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron. That is the chemical signal, means the electrochemical signal, that may be the
that is received by the axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron. Okay, so 25, that is D. Answer is D. Okay. Okay, and now 26, the main function of the ABA in plant is to inhibit the growth. 26C, inhibit the growth. So my dear students, these are the question answer session that get completed up to the question number 25, 26, and remaining questions will be discussed in the next class, in the next video, with some other sections also. So thank you for watching this video. Thank you.